The same I can say in the accounts, sir. There are principles and the accounting works on that. So my familiarity with the mathematics will help me in learning account in faster ways, sir. So you are saying that you will be better at accounts from those students who have already done their graduation or post graduation in accounts. Sir, if not better, then I'm sure that in I will be equal to them, sir. Okay, that's what I'm asking. Why should we choose you over other students who have already their backgrounds in accounts? Sir, here I can say that according to my life experiences and my work experiences, I can say I have developed other qualities which will help me in this job profile. For example, I have worked on a project which was a team project. So I am good at teamwork. I was a teacher, so I have developed a habit of managing students. So I can manage people. Managing And student and managing implies how it will work. Can you elaborate? sir, sometimes we have to pursue the children uh, for good habits. And same in the same way, I can pursue the workers. And if the organization is organizing any camp to aware the workers, so I think, sir, if I given a chance, I can do there better, sir. Tell me, what changes would you bring in the organization if you are selected as an accounts officer in accounting, especially? Sir, as a PRO, public relation officer, profile of the account officer, I would say not even me, any female candidate will bring more sensitivity, because this organization is working for uh, the poor workers. So women are more sensitive here. So by listening the grievances, and apart from that, sir, as a teacher, I have developed the critical analytical thinking, which will also help me there, sir. I mean, in accounting. Sir, I will learn that if I will lack in that, sir, because I haven't studied account as my major, but I have prepared that subject for the written paper, sir. Okay. Kiran, you said that being a female, you will bring more sensitivity to the job that is being given to you. So, do you think males are insensitive? Is that what you're trying to say? No, ma'am, I'm not trying to say that, but I am trying to say that women are more sensitive, and especially the female worker in the factories and the organization. I personally feel that women will be more sensitive to their cause. So, it is supposed to be a gender specific role. That is what you're implying. No, ma'am, sorry, I am not implying that. See, Kiran, what's your age? 29, sir. 29. So you mentioned that as you can discipline your student, you will be able to do similar kind of thing, being an enforcement officer also. You mentioned an example that is as a trainer in EPFO or something like that. So first of all, don't you think you are too young for that kind of position? And second is when you give sir answer that you will be able to sensitize your co-workers or your juniors. Uh, don't you think you are not that much mature to do that kind of a work, or you can have that kind of a impression or a position in this role? Sir, I think my that statement has been misunderstood a little. I am not denying the effort that a male worker is putting there. I am just, in my opinion, I am saying it as women can bring more sensitization to the institute. Give me an example for this. I have appointed you as an enforcement officer. Give me an example. I have sent you on the field to some district like Jharkhand or any area of Jharkhand or Uttar Pradesh. Now you have co-workers who are talking about your new president, the 15th president. What's the name of our 15th president? Sir, Madam President is Madam Draupadi Murmu. What's the name? Draupadi Murmu, ma'am, sir. Honorable Draupadi.
So tell me, when your colleagues are discussing about her and they are just referring her that she got this job only because of a backing of NDA government and she do not have any kind of a contribution or with respect to her political career or otherwise, then tell me what kind of a sensitization you can uh, put here or you can help them understand with respect to this female candidate. Sir, if they are passing this statement, then I would say they are not sensitive enough to understand that Sen- that woman, I'm giving a the situation, sensitize them. How will you make them understand the what kind of a hardship a woman need to face while to get at that position? sir, if we see the Mrs. Draupadi Murmu, ma'am, the challenges that she faced, she is the first woman from her region who get education. She also has faced various challenges in her personal life, and apart from that, she rise like a phoenix, in my opinion. She was a legislator, she was an executor, she also has been served uh, the Jharkhand as a governor, and now she reached and she became the honorable president of our country. So she has already contributed so much, and I don't think so this post is given to her as a charity or as a NDA backing. This is given her to her achievements, sir. No, I'm asking you a very specific question. What kind of a hardship a woman has to face? If I talk in phases, wise, let's simplify it for you. That is, she during her childhood period, during her young age, then once she get married, what kind of a hardship we are talking about in these three phases? This is not specific question with respect to our prime president. This is a general question with respect to women. Sir, the first hardship that a woman faces in every stages of her life, I would say, is getting the opportunity, whether it be the opportunity of the education or the opportunity of the employment. And apart from that, the sir, getting the right to say in her decisions. Okay. Can you tell me the difference between private and public sector in just one line? What is the basic difference? Ma'am, in one line, if I differentiate these two organizations on motive basis, then the private organization motive is to make profit, while the government organization, their motive is to provide welfare of the people. So that is the reason most PSUs are running in loss. No, ma'am, there are other reasons also. I can say the accountability, the efficiency of the worker. Over the time, they become complacent. These things may also be contributed. Okay. Which is the sector in which India's basic strength lies in that you see? So, ma'am, can you repeat the question? In which sector, in your view, does India's strength lie? Education, ma'am. So, if everyone is highly educated, India will be in a better place than it is right now. Yes, ma'am. If it is the quality of education is also be taken into the mind. So, what are your views on the current education system that is prevalent in the country? Ma'am, in my opinion, the current education system need many reform, and especially in the teaching sector, because presently the teachers are not accountable. Their accountability should be checked, and the major stakeholder here should be the students. And apart from that, ma'am, the training programs of the teacher, they should be done in the Teachers are proper way. entirely accountable because, as per recent ACERS report, the student of 8th class cannot solve the basic problems of a second standard. So, who lies accountable there? Is it just teachers? Is that what you're saying?
In my opinion, the two main pillars of the education is the teacher and the student. And if a 8th class student is not able to solve the second class problem, then in my opinion, the teacher should be accountable here. So there is no role of a parent there. Ma'am, of course, the parental role is also there, but a student spend their 6 hours daily in the school. So if we suppose that he or she is not studying at all in their homes, then that doesn't mean that the 8th class student cannot solve the second class problem. There is something. There is no parental responsibility in that case. It is entirely the responsibility of teachers per se. That is what you're saying. In this case, I would say the teacher's responsibility. But if I have to consider the average student and the topper student, there I can also consider the parents' responsibility in providing the opportunity, in providing the environment of study in the homes. What is the current student to teacher ratio average given by the education ministry recently? Sorry, ma'am, I have to look on it. Okay. What are the basic objectives of Frbm Act? Ma'am, the basic objective of Frbm Act is to create fiscal prudence, fiscal consolidation, and in which it is one objective is to reduce the revenue deficit to zero and the fiscal deficit under, I think the limit is, ma'am, 3 or 4. I'm not sure, ma'am. Kiran, talking about the deficit, recently there is a news regarding twin deficit problem of India. What is that? Sir, twin deficit problem is the current account deficit as well as fiscal deficit. Okay, so what's the problem here? Sir, as per current situation, the rupee is falling and the inflation in the crude oil prices we can see. So India has to spend more on the importing things. So here we can see the current account deficit, and this has also an impact on the fiscal deficit, sir. Okay, Kiran, you mentioned about national education policy. Tell me how national education policy will be able to achieve the sustainable development goal. Or can you tell me which sustainable development goal it will aspire to achieve? Sorry, sir, I'm not able to recall right now. Okay, Kiran, I can see that you are wearing a very beautiful sari. But I can see you are from Jharkhand. Sorry, you're Haryana, and but so it's not a traditional dress of Haryana, right? Yes, sir. Okay, so can you tell me about the traditional dress of Haryana? So the traditional art in the Haryana, I would say the Fulkari art is famous in Haryana and Punjab region, which also have gotten the GI tag. And the traditional dress of Haryana is, as per se, sir, the suit salwar for a woman. Suit salwar. Yes, sir. Okay, and for men? For men, sir, in my father's time, it is, sir, the kurta pajama. Now it is changing to the pant shirt only, sir. Okay, what do you will prefer in a man? What should he wear? Traditional dress you like? Or you like him to wear formal shirt or formal dress? How you like it? Sir, anybody looks better in the dress in which he or she is comfortable. So it's totally open on his or her choice, sir. But there will be something which pleases you also, no? Sir, the confidence that person have. Very nice. I can see in your DAF here, you have mentioned regarding your nature of duty performed with your last employer, that is the School Development Index and child right also, protection of child right. Can you tell me regarding the initiative of Delhi government with respect to happiness index, happiness curriculum?
Sir, Delhi government has introduced this curriculum in their in the subjects, uh, and there is one lecture of happiness on the happiness. Some more I have to read about on, especially for this initiative, sir. I Okay. have I know other initiatives of the Delhi government in education sector, sir. Can you elaborate? Can you tell me, don't you have any example of how this education, happiness curriculum works? What kind of a thing they teach in this curriculum to a student? Sir, as per my understanding, it will be something to feel more happy, and I can say a meditation. I have to read on it, sir. All right. Kiran, earlier you mentioned that the problem with public sector is they become complacent. There is problem with their working style. So, do you believe incentivizing them more, giving them more perks will help them or give them a nudge in the direction of performing their duties better? I believe if the recognition of the worker is there, I also have seen it in the Delhi schools while doing this project. Then the Delhi government started recognition the teacher. There are red carpet movement, the advertising of teachers. So if any person in public sector is doing good, then if we do such things, such rewarding programs, then it will help. What sort of recognition and rewards are we talking about here? Uh, Ma'am, the nice word for his or her good work, the recognition from the colleagues, from the department, ma'am. See, Kiran, you are already being a teacher. Definitely, you are getting that kind of a privilege or prestige or kind of a honor you must be getting there. So then, why you are looking for this profile? Do this honor or respect is more important for you, or the kind of remuneration you will be getting in EPFO? Sir, the cause for this EPFO, this organization is working. My family is not covered under any social security, so I know how it feels when such families face a crisis. And apart from that, sir, my present work profile, I have to work in the night hours, so which is difficult, and there is no job security, and I am not also covered under any other social security. So. Okay, so basically, we are looking for this job as in kind of a social security, or it's a government job, so it will be giving you that kind of a social security. I have two last questions to you, Kiran. One is we were discussing about the child right. Can you tell me which labor law covers the aspect with respect to the working hours for the child? Sir, the Child Labor Regulation, Prohibition and Regulation Act of 1986. Okay, do it cover the working hours of child? Sir, it stipulated that there should not be more than 6 hours of work for a child in a single day, and it includes also the break time, which is of 1 hour. Acha, what's the difference between separate hours or separate period and the working hours? Spread over period and the working hours. Do you understand the difference? Sorry, sir, I have to read about it. Okay, then what about the Factories Act then? What are the working hours mentioned in the Factories Act for the children? Do we know the definition of child as per the Factories Act? So as per the Factory Act, the children is someone who has not completed 15 years of age. 15 years of age. Are you Yes, sure? sir. Yes, sir. Then who is adolescent? Sir, the one between 15 to 18 years, sir. As per the Factory Act, sir, as far as I can remember, it is 15 years, sir. Okay, Kiran, that's all from our side. Just be there. We will come back with your feedback. Okay.
Kiran, am I audible? Yes, sir. Okay, Kiran, first of all, tell me what things you have identified, what problem or the concerned area you have identified for yourself. सर शायद मैं सोच रही हूँ वो कन्वे नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। आपका इंटरव्यू कब है किरण? 1 अगस्त को है सर। 1 अगस्त को। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तो वर्क ऑन द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टेल यू। ठीक है, आप भी लिस्ट बना रहे हो, आई कैन सी, तो नोट कर लेना। और वैसे भी आपको हम इसका वीडियो का रिकॉर्डिंग भी दे देंगे। ठीक है, इस इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं जिसपे हमें वर्क करना है, क्योंकि आपका डेप्थ देखते ही, जैसे हम अभी आपका डेप्थ देखेंगे, इंटरव्यू देखेगा तो सबसे पहले उसको 2 वर्क एक्सपीरियंस दिखते हैं उसमें। ठीक है, और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी हमें दिखता है एमएससी मैथमेटिक्स, और उसके इमीडिएटली बाद हमें दिख रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर असिस्टर। ठीक है, तो दिस इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एजुकेशन पार्ट। ठीक है, एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, असेसमेंट, जैसे मैम ने आपसे प्रथम के रिगार्डिंग पूछ लिया, टीचर चाइल्ड रेशो के रिगार्डिंग पूछ लिया, तो ये सारी चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, एंड आपको इसमें जो मेंशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ ड्यूटीज, सो चाइल्ड राइट, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, वो उस पर आपको काम करना है जिसपे अभी हमने नहीं किया। स्कूल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, चाइल्ड राइट के लिए नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे क्या प्रोग्राम्स बने, लेबर लॉज कैसे इनको कवर अप कर रहा है। ठीक है, इसके हम गलत आंसर दे रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके कई गलत आंसर हमने दिए। हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या बोला कि जो आपका चाइल्ड राइट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, वो बात कर रहा है अबाउट द वर्किंग आवर्स। ठीक है, कुछ आइडिया तक वो ठीक है, बट आप वर्किंग आवर्स को डिफाइन नहीं कर रहे हो वहाँ पे, तो हमें उस पर क्लैरिटी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट में आपका आंसर ठीक था, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, बट यू आर नॉट सीम्स टू बी दैट कॉन्फिडेंट। ये हम सबने ऑब्जर्व किया है कि हम उस कॉन्फिडेंट के साथ आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहां पर आती है। आपने कई अच्छे आंसर दिए, बहुत अच्छे आंसर हैं कई आपके। ठीक है, व्हेन यू आर स्पेसिफिकली बीन आस्क्ड अबाउट द योर प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू मेल ड्रेस, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आंसर। यू मेंशन अबाउट कि वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, दैट्स अ गुड आंसर। सो यू हैव अ गुड अप्रोच, बट अभी थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। उसका रीजन क्या है? क्या हमारी प्रिपरेशन नहीं है और वी आर फीलिंग लिटिल बिट नर्वस हियर? प्रिपरेशन नहीं है सर, अभी तैयारी नहीं की। हाँ, तो अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है ना तैयारी करने का, 1 हफ्ता रह गया, किसकी वेट कर रहे हैं फिर हम? सर मुझे अकाउंट्स पढ़ना चाहिए या जो ये पॉलिटी है, अकाउंट्स पॉलिटी, ये ब्रश अप करना चाहिए? बेसिक अकाउंट्स आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बेसिक ओवरव्यू ले लो। आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है? इंडस्ट्रियलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, या फिर ईपीएफओ का सिलेबस? सर इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो मैंने आपके क्लासेस लिए थे, और अकाउंट मैंने एक अलग सर की क्लास लिए थे। अच्छा, तो फिर बेसिकली सक्सेस ट्री का मटेरियल है आपके पास, है ना? हाँ जी सर। तो एक बार इस मटेरियल को गो थ्रू हो जाओ। इट्स वेरी कंसाइज मटेरियल, तो 1 हफ्ते में हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से देखो, हर एक एक्ट का प्रीव्यू देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाओ, बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो विजन के रिगार्डिंग, मिशन के रिगार्डिंग, प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं ईपीएफओ पे, तो वो काम आप कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमने इस साइड पे कोई वीकनेस नहीं छोड़नी है। और कुछ क्वेश्चंस पे या कुछ पॉइंट जो आपको तैयार करने हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन की डेटा इंडेक्सेस। ठीक है, और जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपसे पूछ लेंगे, बिकॉज आपका यहाँ मेंशन है अंडर दिल्ली गवर्नमेंट आपने प्रोजेक्ट रन किए हैं, पार्टिसिपेट किया है, तो वो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस करिकुलम कैसे नहीं पता, बिकॉज अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट काफी ज्यादा उसको एडवर्टाइज भी कर रही है ना, दे आर सेलिब्रेटिंग इट बेसिकली। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज पे। ठीक है, और जब हम बात करें कि आप गीक वर्कर हो, तो आप वहां पर भी लेबर लॉ के इनकरेक्ट आंसर दे रहे हो। जो आप बोल रहे हो कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो इट्स इनकरेक्ट आंसर। मटर्निटी बेनिफिट पे भी आपने गलत आंसर दिया है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको एक बार रिवाइज कर लोगे ना अपने नोट से, तो ये हो जाएगा सारा कवर। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव वेरी काइंड ऑफ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, आई वुड से। ठीक है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव वेरी गुड स्माइल। थोड़ा सा अपना स्माइल करना शुरू करोगे पैनल के सामने, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा, एंड दे विल मेक यू कंफर्टेबल, यू नॉट नीड टू नर्वस। ठीक है, इन अ मॉक इंटरव्यू दिस इज आवर पार्ट कि हमें आपको थोड़ा सा सारे डायमेंशन पे चेक करना होता है, इस करके हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, बट दे विल मेक यू कंफर्टेबल, तो यू नॉट नीड टू फील नर्वस अबाउट दैट। हेलो किरण। जी हाँ।
नर्वस नहीं होना है, आपका इंटरव्यू अच्छा था, इट इज आवर जॉब टू ग्रिल यू, ठीक है। जितना आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी होगी उतना विल परफॉर्म बेटर इन द इंटरव्यू, ठीक है। नाउ आपने काम करा है विद दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। आपका जो बेसिक अगर हम रिकॉर्ड भी देखें, इट इज विद चिल्ड्रन, ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारा कोलैबोरेट करके आपकी बेसिक नॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तो होनी ही चाहिए, जिसका आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो जितने पर्सपेक्टिव कोरिलेट करते हैं आप वो मैच करेंगे। देन मैंने आपसे पूछा प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में रिलेशन क्या है, तो वहां आपने कंप्लेसेंसी की बात करी, ठीक है। बट मैंने आपसे ये पूछा कि रिवॉर्ड्स देने चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो, जो फॉलो अप क्वेश्चन थे ना और जो आपके इनिशियल आंसर्स थे वो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। सो आप थोड़ा सोच के बोलें कि क्या बोल रहे हैं, एंड ये सोच के चलें कि आप जो आंसर दे रहे हैं उस पर नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन सेम बात पे निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप थोड़ा सा अपना अकाउंट्स वाला पोर्शन है उसको ब्रश अप करिए। देन जो जैसे सर ने बताया आपको एसर की रिपोर्ट है, प्रथम की रिपोर्ट है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड एंड टीचर पेडागॉगी, तो उसमें आपने सारा ब्लेम टीचर्स के ऊपर डाल दिया, ठीक है। दैट इज नॉट हाउ द होल एजुकेशन ऑफ टीचर्स वर्क, बिकॉज बचपन से हम ये सुनते आते हैं पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, है ना। तो थोड़ा सा इसको आंसर को अपना अच्छा सा फ्रेम करिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एंड यू वेयरिंग अ रियली ब्यूटिफुल साड़ी, लेकिन थोड़ा सा इशू है, प्लीज जब आप इंटरव्यू में जाएं ऑप्ट फॉर कॉटन एंड न्यूड कलर्स, ठीक है। प्लेन साड़ी करेंगे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आपका ड्रेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा कई बार ना ग्रिल करने पे आए तो पैनल आपको ग्रिल कर देता है। इवन इफ यू सी मॉक इंटरव्यूज, जो यूपीएससी कैंडिडेट्स होते हैं, ईपीएफओ वाले, दे प्रेफर गोइंग विद समथिंग प्लेन एंड न्यूड, ठीक है, समथिंग खादी। तो एक सेक्शन आपका ग्रिल करने का हट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसके ऊपर देखिए, अदरवाइज इट वॉज गुड। Kiran, basically it is not about what you answer, it is more about how you answer. जरूरी नहीं है आपके आंसर्स बहुत लंबे हों, जितना ज्यादा आप आंसर को लंबा करोगे उतना ही ज्यादा वो कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन में चला जाएगा। हो सकता है आपने पहले कुछ कहा हो, अब आप कुछ कह रहे हो, क्योंकि वो अनप्रिपेयर्ड सा लग रहा, ठीक है। तो बेटर है कि कुछ क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लें और आराम से आंसर दें। आप सोच रहे थे लेकिन उसके लिए परमिशन कभी नहीं मांगी, ठीक है। गेस कर रहे थे, उसके लिए भी आपने परमिशन नहीं लेनी। पैनल से आप परमिशन ले सकते हैं, कैन आई गेस, मे आई गेस, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं आता है किसी क्वेश्चन का आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड से सर आई डोंट नो राइट नाउ, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आप गलत आंसर दें। वो आप गलत आंसर दोगे, वो एक डिफरेंट आपको एक नया क्वेश्चन दे देंगे, वो आपको आता नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी। हाँ जी, बर्थ प्लेस से रिलेटेड प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। अभी हमने कुछ प्रिपेयर किया है बर्थ प्लेस के रिगार्डिंग, फिर झज्जर के रिगार्डिंग, किया तो था सर। बहादुरगढ़ के रिगार्डिंग किया थोड़ा है। सा और अच्छे से कर लीजिए। क्या क्या प्रिपेयर किया है? सर बहादुरगढ़ का तो यही कि इसका हिस्ट्री क्या है, अभी इसमें प्रेजेंट इसके स्टेटस क्या है। झज्जर का भी वही कि कैसे बना, कब बना, क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है। किरण, मैंने आपसे पूछा था बहादुरगढ़ के बारे में, कपल ऑफ चीजें बताइए जो उसको डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा से, तो कोई कंक्रीट आंसर आया नहीं। समझ रहे हो बात को? यू जस्ट सेड इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया तो पानीपत में भी है, सोनीपत में भी है। पानीपत में हैव वी होल पचरंगा मार्केट जहाँ हैंडलूम बिजनेस है। सो थोड़ा सा इस लाइन पे वी वांट यू टू गिव यू अ हेड्स अप कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देखो किरण, मैं आपको कुछ चीट कोड बताता हूँ करना क्या है। जैसे मैम जो कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, एक्चुअली हम चाह कह रहे हैं एज अ पैनल कुछ इंटरेस्टिंग चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि जब आप एंटर करोगे तो उनको लगेगा हम इससे हम कुछ इंटरेस्टिंग पूछ सकते हैं या जान सकते हैं, ठीक है। तो हमने उस इसी एस्पेक्ट पे आंसर करना। जैसे अगर आपसे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, ठीक है, या आपका पहले वर्क एक्सपीरियंस में क्या कुछ
डेवलपमेंट्स रहे हैं वो पूछ रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्टिंग बात बताओ कि भाई जब मैं टीचिंग में थी तो दिस इज हाउ आई हेल्प्ड, और जब मैं गवर्नमेंट ये दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काम करी थी तो दिस इज अ गुड पार्ट अबाउट दैट प्रोफाइल। ईपीएफओ में मैं अगर आऊंगी तो मैं वुमेन्स के प्रोस्पेक्टिव को इस तरह से बेटर इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, आंसर भी बनाने पड़ेंगे, इंटरेस्टिंग आइडियाज लेके आने पड़ेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग पूछ रहे तो आप कुछ इंटरेस्टिंग बताओ जो कि अदरवाइज विच इज नॉट दैट मच, विच इज नॉट जनरली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमने लेके आना है ताकि आपका इंटरव्यू और कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, और आपको ग्रिल करने के बजाय दे विल गेट इनटू अ कन्वर्सेशन विद यू, कि वो आपसे कन्वर्सेशन में जाना चाहें इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू एनी रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रैंडम क्वेश्चन फिर नहीं आएंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस वाला जो सीन है वो भी हमें इशू नहीं रहेगा। बट ये तभी हो सकता है अगर आपने बेसिक आइडियाज, बेसिक सिलेबस कवर अप कर लिया हो। तो अभी 3-4 दिन लो, बेसिक सिलेबस को कवर अप करो, एंड फिर कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऐड करो रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर प्रेजेंट वर्क ऑल्सो। ठीक है, एंड बाकी सारा बिल्कुल आप तैयार हो। बेसिकली यू आर वेरी गुड टू गो एंड यू आर वेरी मच a suitable candidate for EPFO also. ठीक है, they will like your personality and would like to have you in their organization. बस हमने कोई ये छोटी छोटी चीजों पे काम कर लेना है बस। ठीक है, हमारा रिटर्न स्कोर कितना बना है अभी? सर बिल्कुल मिनिमम 199 पॉइंट समथिंग था, उससे ऊपर ही जाएगा, तो 205 प्लस हो सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें तो हमारी सिलेक्शन कंफर्टेबली हो जाएगी, है ना? हाँ जी सर। हमने आई होप आपको जो चीजें हमने बताई हैं आपने इसे नोट भी कर लिया, तो इस पे आप काम कर लोगे आप, और अगर इस पे काम कर जाते हो तो बी श्योर यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, और ये जो स्माइल अभी आई है ना फेस पे, ये थ्रू आउट द इंटरव्यू रखनी है हमने। ठीक है, यू हैव वेरी गुड स्माइल, ये मेंटेन रखनी है हमें। सर मास्क है ना वहाँ, तो मास्क पहना रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर मास्क पहना रहे हैं तो एक्सप्रेशन तो वाइस तो पहुंच ही जाती है ना पैनल तक। The ठीक है, smile actually goes till your eyes. We people don't realize that. ओके। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी इतने सारा हो गया, इसी पे वर्क करती हूँ। हाँ, इस पे काम कर लो, कुछ कंसर्न आता है तो यू कैन गेट इन टच विद अस, एंड वी होप फॉर योर सक्सेस। एंड वन मोर थिंग, एक काम हमने करना है बिकॉज वी नो कि सक्सेस टीम ने आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन हेल्प किया है। जी सर। हाँ, सो हमने भी एक थोड़ा सा काम करना है, जो आपका इंटरव्यू हो जाएगा सो प्रोवाइड अस विद द ट्रांसक्रिप्ट की जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए और आपने क्या आंसर किए। हम भी थोड़ा इवेलुएट करके आपको फीडबैक दे देंगे, और साथ ही ये ट्रांसक्रिप्ट हमें काम आएगी नेक्स्ट जब हम यूपीएससी का यूपीएससी ईपीएफओ का नेक्स्ट बैच लेके आएंगे, तो उन बच्चों को भी हेल्प करने में काम आएगी हमारे। ठीक है, कर देंगे इतना हम। हाँ जी सर। ऑल राइट, सो दैट इज गुड टू गो नाउ। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड, एंड आई थैंक विल लाइक टू सी यू एज a सक्सेसफुल ईपीएफओ ऑफिसर। थैंक यू सर। Thank ऑल you. द बेस्ट। The best.